वक्रतुंडाय हूँ, वक्रतुंडाय हूँ। आदि गुरु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै। बहुत अच्छा। फिर अभी डिस्टरबेंस हो गया। अभी कृष्णा कपूर जी घाना अफ्रीका से ज्वाइन किए हैं। कृष्णा कपूर जी हमको जब पेस मेकर लगा था तो उन्होंने हमको बहुत गाइडलाइंस दिया था। अभी मैं घाना गया था तो उनसे मिला था और उन्होंने बहुत सा गाइडलाइंस दिया। उनको भी 2 अटैक हुआ और वो अभी अच्छे हैं और हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारा सौभाग्य है। तो कृष्णा कपूर जी आप हमारे बुजुर्ग भी हैं और हमारे मेन अभी चीफ गेस्ट आए नहीं है। तो इस बीच में मैं चाहूँगा कि आप अपना अनुभव कैसे कैसे ये हुआ था। जब मेरे चीफ स्पीकर आ जाएंगे तब फिर आपको फिर उनको बोलेंगे। तब तक आप अपना अनुभव कुछ बताएंगे जैसा हमको बताया था आपने। कृष्णा कपूर जी वेलकम और बहुत स्वागत है। वी आर वेरी लकी टू गेट यू इन दिस वेबिनार अमिताभ ग्रुप। So Mr. Krishna Kapoor from Ghana, Africa, South Africa, where my son is working. He is just like local guardian of my son. तो सर आप कुछ बोलेंगे बोलिए। बहुत आपका अनुभव बहुत सटीक है। प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है। आपका माइक म्यूट है। अनम्यूट। हाँ प्लीज। देखिए, first of all, I'm not in South Africa. I'm in a country called Ghana. It is in West अच्छा Africa, and या that's one. And I don't want to say much about myself. I just joined because I'm especially interested in Ayurveda, and we have started Ayurveda consultation in Ghana, and I encourage Ayurveda. We just came from a 4-month trip to India. We just returned, and we were in Kambachur, and we went to AVP hospital in Mangarai, and we had a 3 weeks treatment there with myself and my wife. We just returned. So I was curious about the topic today, this Ayurveda topic and diabetic. So that's how I joined. So I don't have much to say, please. I'm a better listener. No, that means main symptom of high pressure. How people are affected with high pressure. That for that only your experience will be enough for us until this our chief speaker is coming. I'm Can you sorry, see? can you repeat what you just said? मैं चाहता हूं कि जो आपका अनुभव किस तरह से लोगों को हाई प्रेशर होता है। इसमें बहुत सारे डॉक्टर आने वाले हैं। तो योर एक्सपीरियंस हाउ यू सफर्ड फ्रॉम हाई प्रेशर और उस समय कैसा आपका एक्सपीरियंस। वी वांट टू लिसन दैट। No, my case is very unique. First of all, I'm 83-year-old, and my childhood I spent mostly on Ayurvedic treatment. My grandfather was a Vaidya, so I was brought up on very natural food, and I'm a wrestler myself. When I was a child, I was a wrestler.
So Yeah. our way of life when we were children was very different. So anyway, as we grew and we went into allopathic medications, I was one time in a long time back. I was diagnosed with a TB, which I didn't have. So they put me on for 3 months on antibiotic, which really destroyed all my sort of various part of my body, and my heartbeat went to 20. So there was no other choice but to go for a pacemaker. So I went to India to get a pacemaker in 2007. So now I have a pacemaker for last to 17, about 8, 9 years now. I've been having this pacemaker. And it's doing fine. So when I heard about you, so I just told you what my experience was. So that's the only thing I have. And when I had a pacemaker, I was given about 15, 20 medicine, which I have reduced to only one medicine, which is the blood pressure medicine. I only take one dose in the morning and one dose in the evening, which is a half dose in the evening. I don't have any problem. I am quite okay. Once in a while, I do go to India for Ayurvedic treatment. We just return, and we are enjoying our life. Today's speaker is a great Ayurvedic doctor and one Baswi Kiro. He is ethnic, what we say, some Ayurvedic bed also. She is Ayurved. She is also expected to come today. So I think that I don't know why delay in their coming. In the meantime, we will be discussing about that. No. तो चंद्रेश्वर खान साहब आपका क्या अनुभव है आप अपने आशीर्वाद बच्चन से इसको शुरू करिए जब तक हमारे एन प्रसाद साहब आते हैं तब तक जी हाँ चंद्रेश्वर प्रसाद खान साहब साहब is a best faculty award winner of India and we are happy that you have come to Mr. Krishna Kapoor ji आप क्या you have come to India Coimbatore Right. I was with Ari with the pharmacy. yeah Kishan Kamarji was the warrior was very close. And we used to sort of encourage the Ayurvedic practices. He passed away yeah during COVID. The next yeah gentleman has taken over. His nephew has taken over. We were there for 21 days treatment in Mangrai near Nilgiri Hills. And I am a fan from childhood for Ayurvedic products. अच्छा अच्छा very good चंद्रेश्वर खान साहब प्लीज जी 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 thank you very much. We are very delighted to see Sri Krishna Kapoor and the way in which he approached and radiated the feeling that itself has changed the complete environment. Now it looks Prasad ji has come. Prasad ji has come. Amitabh ji, uh, let us. Uh, ओके Prasad Saab, our chief guest has come. So, Prasad Saab, Dr. Krishna Kapoor Saab has come from South Africa, from Ghana. So, we welcome our the special guest, Sri Krishna Kapoor ji. In the meantime, our chief speaker, SM Bhatt साहब डॉक्टर SM भट्ट साहब आपको सुनने के लिए बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं और बड़ी उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे हैं तो टू वर्ड्स ब्लेसिंग्स वर्ड्स फ्रॉम ये फ्रॉम Maheshwar Prasad साहब he was special secretary to government of India and he is at present 84 or 85 so with his blessings we are running our organization very nicely Anil Prasad साहब has also come तो दो वर्ड्स ब्लेसिंग्स के प्रसाद साहब के शुरू हो जाएं और उसके बाद हम SM भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे अपना आयुर्वेद अपना अनुभव बताएं और एक चीज आप खुले गाम में बता रहा हूँ कि SM भट्ट साहब के सलाह से SM भट्ट साहब के प्रिस्क्रिप्शन से SM भट्ट साहब के दवा से हमारे ग्रुप के मेंबर को बहुत फायदा हो रहा है
In the meantime, I'll be requesting our chief guest, Mr. A.M. Prasad, to say 2 words, blessings words. S.M. Prasad ji, हाँ, S.M. Prasad, A.M. Prasad साहब, प्रसाद साहब, प्रसाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, अमिताभ जी जी, बहुत ही विद्वान अमिताभ, आपने ऐसे वर्ड का नाम लिया, वो बड़े बहुत ही और हाँ, जो भी वो दवा बनाते हैं, हाँ, बहुत अच्छा से दवा बनाते हैं और लोगों को फायदा भी मैं कर रहा समझता है। हूँ कि उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको हार्म हो सकता है कोई, जी तो जी, फायदा तो आपको होगा, लेकिन डर ये लगता है लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन खाने में कि कहीं ऐसा नहीं कि उसका नुकसान होता हो, क्योंकि पता तो नहीं चलेगा। हम्म, तो मैंने महसूस किया है कि उससे नुकसान नहीं होता है। हम्म, रही बात कि फायदा हो जाए तो बड़ा अच्छा है, कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन मुझे एक समय तो हम उसका फायदा उठा लिए हैं। अब दूसरी दवा मंगाई है, इनफैक्ट उसका पेमेंट भी हमको करना है, बहुत अच्छा। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ लेकिन है मैं भट्ट। इतना ही कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़ा अपने हाँ अपने हाँ, अपने तकलीफों को बहुत अच्छी तरह से सारे बहुत सारी जो दवाएं हैं हम्म, वो बड़े कुछ जनरल यूज की हो जाती है, हम्म, उसको कफ में भी और पेट की बीमारी में भी वो अगर होता है तो फायदा उससे थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं अलग अच्छा से अच्छा, बात करने वाला हूँ उनसे। हम्म। हाँ, चलिए तो आप आज अपने का अपना अपना ये बात पूछिएगा उनसे। तब तक हाँ हम एच.एम. भट्ट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना ये शुरू करें। डॉक्टर प्रियंका भी आई हैं, डॉक्टर प्रियंका से भी हम लोग सुनेंगे। और हमारे कृष्णा कपूर साहब अफ्रीका से जुड़े हैं, उनको भी आयुर्वेद का बहुत अच्छा अनुभव है। उनके पिताजी आयुर्वेद वैद्य थे। और हाँ प्रसाद साहब ने जो अपना परिचय अपना वो बताया है, वो उसको भी हम लोग पूछेंगे। तो भट्ट साहब आप अपना शुरू करें। भट्ट साहब आप अपना शुरू करें। हाँ, नमस्कार सर, सभी को प्रणाम, सभी विद्वत जनों को प्रणाम। मेरा नमस्कार, सब लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। अगर छोटी मोटी त्रुटि हो जाए, मैंने जो सीखा है आज वो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ, और सबका आशीर्वाद रहेगा, ऐसी आशा है। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, जो कि आज यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के संबंधित है। तो अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको लास्ट में ले लेंगे, बीच में भी डिस्कस कर सकते हैं। और ये टोटल मैं बता दूं कि 100 स्लाइड है, लेकिन मैं इसको टाइम से ख़त्म कर दूंगा। तो आजकल आप देखें, हिंदी इंग्लिश मिक्स में दूंगा प्रेजेंटेशन, ताकि सबको इंटरेस्ट बना रहे और समझ में भी आ जाए। तो आजकल बच्चों से लेके बुजुर्गों से लेके यंगस्टर्स में सभी में हार्ट अटैक आ रही है। और अभी लास्ट में न्यूज़ आई थी, लास्ट वीक का मैं देख रहा था, 8 साल की बच्ची को भी हार्ट अटैक हुआ। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या कारण है, लेकिन एक न्यूज़ देख के मैं हैरान था बिल्कुल, जो जी बिजनेस पे आई थी, कि कोरोना गया और दे गया दिल की बीमारी। तो ये जान लें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुरक्षित है आज की डेट में, जिसको हार्ट अटैक होने के चांसेस नहीं हैं। क्योंकि कोरोना ने क्या किया, ये सारे न्यूरॉन्स को और मसल्स को वीक करके चला गया, और जरा सी लापरवाही हुई तो ये घातक हो सकता है, और ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। इवन एक सर्वे भी आई थी, ये न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, जिसमें कि एक जोन में कानपुर में उत्तर प्रदेश में दिखाया गया कि काफ़ी लोगों की जो है हार्ट की समस्या आ रही है, और हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, उसके लिए दिखा रहे हैं। तेलंगाना से एक रिपोर्ट थी जो कि मैं न्यूज़ देख रहा था, कि कई लोगों को एसिडिटी और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम की तरह लगी, लेकिन एक्चुअल में वो हार्ट अटैक का पहला सिम्टम था।
जिसमें कि काफी मसल क्रैम्प हुआ, दर्द हुआ उनको पेट से लेके हार्ट में। तो मिस डायग्नोसिस भी कहीं ना कहीं हुई और कई लोगों की जान गई तेलंगाना में। तो 40% ऐसे केसेस आए। और एक क्लासिफिकेशन की मैं बात करूंगा, ये रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें कि जो सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं, जिसको स्टेमी नाम दिया गया है, माइनर हार्ट अटैक भी इसको बोलते हैं। ये एक रिपोर्ट आई थी कि लास्ट उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में 319 पेशेंट में से 4% डेथ हुई थी। गांधी हॉस्पिटल में 390 में से 3% की डेथ हुई थी। और वारंगल में 174 में से। इसी तरह से स्टेट वाइज का डेटा देखा जाए तो काफ़ी रिस्की है। और ये उन लोगों में ज़्यादा आता है जो अचानक चलते चलते जिनको हार्ट अटैक आ रहा है, पता भी नहीं चलता, कोई साइन नहीं, कोई सिम्टम नहीं। तो that is only because of their habit. Sometimes they are diabetic, sometimes they are smokers, sometimes they are taking a lot of junk food. So suddenly heart attack occurs, suddenly mild breathlessness, and they may appear, and immediately the patient is gone. They have no time to save. Even for cardiologists, it's very difficult to diagnose early before such kind of things. So Yeah? in such cases, it has been observed that there is a lot of heart muscle damage, and that was the only cause of heart failure in such kind of semi or minor heart attack or kind of sudden heart attack. Okay, so we will see a broad description, exactly what is happening, what is the exact season. Some reports, American Heart Association journal is reporting that mostly the heart attacks occur in the winters. Okay, so there is a journal of US published by the US, that is called the British Medical Journal, and according to them, mostly heart attack occurs in the winter. And this is the peak time, December to Feb. This is the peak time when mostly people are facing such kind of problem. They might be the patient of diabetes, they might be some kind of problem over there, and they cause such kind of sudden heart attack. If they are developing slowly, then you can feel the certain signs of the heart attack, they may be starting from the vomiting, shortness of breath, and pain in arm, upper back, neck, jaw, stomach, fainting sometimes without any reason, unusual fatigue, and inability to sleep. If this kind of symptoms are developing, then one must be very cautious. And sometimes you can see the pain in the chest, and sometimes there may be dizziness, lightly dizziness. You cannot walk, आपको चक्कर आने लगता है थोड़ा थोड़ा walk करने पे, उठने पे। Dr. Saab, your slide is not moving. Slide is not moving. Okay, sir. Okay, just I'm sharing again. Thank you, thank you. Sometime it's happening. So I'm again sharing. Okay, sir. I think this time. Now it appears, sir? Okay. You can read useful plant to be used after 40. Sign of heart attack. The picture is visible, sir? Yes, sir. Okay, thank you, ma'am. So I was discussing there are some symptoms that are very common to women, even the aged people, even the youngsters. So these are not the common. These are not the simple symptoms. You maybe pay attention to these symptoms. They might be a sign of heart attack. And if you are using certain kind of plant, I will discuss the a detailed clinical studies, trials, and some Ayurvedic herbal plants, some medicine also that must be used after 40. And these plants have a strong evidence to save you from any kind of such problems, like ginkgo biloba, amla, very commonly available in these seasons, garlic, very common,
everyone might be knowing garlic, use of garlic in these kind of symptoms. Arjun chal and Ganoderma. This is a kind of mushroom. Ganoderma lucidum have a lot of potential in reducing these symptoms. So our Prime Minister is also using this Ganoderma daily. What is my information is there. That's why he is very young, fit, and doing a lot of national and international work. This is For very, very costly, sir. yes, ma'am. Pardon, ma'am. This is costly enough, na? Like This is ये very जो very costly. mushroom है. Exactly. This is very costly. Yeah. Around 3,000 rupees for a kg. You get. Everybody can't afford, na, sir? That's the problem. So alternative, very good alternative is garlic and arjun chal. There Yeah. is a no alternative of amla. Amla you must use. Garlic I will tell you how to use, and arjun chal. This is the three cheapest available herbal medicine that is born to reduce all these symptoms up to 95%, 99% you can say. Okay, only 1% chance is there. If anyone is very casual in taking these symptoms lightly or taking some kind of junk foods, habitual of taking the junk food. Because, what is the major cause I have found of heart attack? A lot of diet are doing this function like inhibiting endothelial dysfunction. Endothelial is a blood vessel that is found in the heart, and sometimes they are activating the platelets. Platelets are damaging factors for the blood vessels, walls, and if you are taking a lot of Domino's pizza and other junk foods, then there we can observe a high level of lipid peroxidation, and that is generating a lot of reducing oxygens, and they are very damaging to our cells, walls, muscles. And if we are activating our macrophages, then automatically they are eating a lot of things in our body itself. So, Allium sativa, this is the name of garlic, and this is the classical example of most widely used in treatment and management of cardiovascular disease. I have made a garlic extract based capsule that is called the Allicin Gold, and that is very very powerful in reducing these symptoms, and especially who are having these plaques in the heart, kind of blockage in the heart, and a certain kind of diagnosis revealed a high level of blockage, and giving these Allicin Gold has reduced the symptoms significantly. And this is डॉक्टर साहब आवाज बंद हो गई. if you are if you are Again, eating a again. lot of snacks and a lot of oils, then maybe lipid content increasing in our body and heart, in blood vessels, right? So allicin contains certain chemical components which are diluting these lipids based blockage, and that's creating a lot of plaques, and that's causing a repeated heart attack in sometimes cardiovascular disease, what we are saying, in the form of hypertension, oxidative stress, and hyperlipidemia, any kind of inflammation. All these are going to be reduced by only one medicine, that is allicin. Allicin is heavily found in garlic, and there are variety of garlic. Plain region of garlic having very less content of allicin. So what we are doing, we are getting extract from the garlic that is grown on the mountain regions, hilly regions, because the environment is very inducing for production of a lot of allicin in that garlic. So every garlic is not beneficial.
some special kind of garlic that is containing allicin sulfur-based component, which are helpful in reducing these plaques, arteriosclerosis, and hyperlipidemia. Even we are using it in the weight loss management because gaining weight is also very bad, and for there may be cause of sometimes the heart attack. So there are two type of lipid, as you know, HDL and LDL. So what the if you are eating some certain food component that is rich in LDL, and they also are helpful in reducing the lipid content in the arterial cells. So that's why we can manage the problem of hyperlipidemia and atherosclerosis. So I was watching a very good plants that is called as Astragalus membranaceus that is found in the Chinese region. So they are very useful. They are widely available in Indian market also. They are very good for protecting against the ischemic associated cardiovascular diseases. And in clinical trial in the rats shows that they are improving a lot of such conditions, and they're improving the energy metabolism, inhibit the production of free radicals, and myocardial ischemia. So this is widely available in Indian market, and they are heavily used by Ayurvedic doctors to heal the patient, and especially such a kind of medicine like astragalus is also very beneficial uh, in the lungs infection that was caused during the COVID. So that is also not having any toxic reports, and they can be used for multi-purpose diseases. So that was a kind of questions raised by many people. Are herbal medicine effective, and what are they? What are their name that is available in the Indian region also? And are they effective in controlling these kind of symptom, cardiovascular diseases, minor heart attack, major heart attack? So, and how they are working exactly? So you'll see a lot of commercial drug preparation is going on in the market, and that is extracted from the ephedra plants, digitalis purpurea, that is also called as the foxglove, and salicin, aspirin, that is synthetic formulation in the form of aspirin that was isolated from the salicin plant, and willow bark, that is producing a salix alba, reserpine from Rauwolfia serpentina, snake root, and there are a number of plant I will discuss today. Beside this, exactly what they are doing, they are the natural blocking agent of beta adrenergic receptor that is going to major cause of heart attack and a major cause of the pain in the heart. So they are natural blocking agent. So a lot of studies nowadays going on in these herbal science. For example, if you'll ask me, what is exactly the component of Arjuna? The Arjuna contain a component, major component, that is arginolic acid, and we must not lose it by heavy cooking or in the tea or kind of capsule formulation extract is very useful in having from the congestive heart failure or kind of certain angina pain or kind of hypertension. They're very these oils are these acids are exactly very cardioprotective in nature because they are heavy. They are containing the heavy component that are antioxidant in nature, and it has been observed that if we are using the formulation, exactly formulation of alcoholic extract of garlic, then also it has been seen the one wonderful effect in the rabbits, in the rats, in the human being also. Along with that, haldi, what we know, they have a very good component. Turmeric contains curcumin, and curcumin. Oh, sorry, just a minute.
आवाज बंद हो गई सर। नहीं नहीं सर, आवाज नहीं बंद हो गई, हमने चाय रखी थी वो जल गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय रखी चाय थी। रखी थी उस पे, वो मुझे याद नहीं रहा, हाँ, अच्छा गिर गया क्या? वो जल गया, तो धुआं फेंक दिया। अरे राम, अच्छा अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं। हाँ। तो या दिल जले या चाय जले, कुछ ना कुछ तो जलना है। तो आज बाशवी मैम टॉपिक, परहैप्स हैज कम दो। बाशवी मैम आ गई हैं क्या? Yeah, So good down, evening, sir. Good evening, sir. after long, we have seen, and so many people are eager to listen you also with Dr. S.M. Bhatt, because you Thank are, you very much. Thank you very much. sir, and one class I will be taking for you also. Yeah, Uh, yeah, sure, sure, sure. sure. Yeah, yeah, But good evening, everyone. Good evening, yeah, everyone. yeah. We are lucky that you have come also, no? Yeah, I, we are lucky. And means Dean of AIMS, Dr. Umesh Badani Saab has also come. Dr. Umesh Badani, MBBS, he has also come. good So evening we sir, good have evening everyone. Ayurved doctor, MBBS doctor, ethno medicine doctor. All doctors are medicine. All doctors are available. So we are very lucky today. So we have to listen very carefully. Or means from Africa, Krishna Kapoor Saab has also come. His father is Ayurvedic band. तो चलिए हम So लोग good इसका evening everyone. मतलब नॉलेज हम लोग गेन करें। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए हैं। या प्लीज प्लीज, Please sir, please sir, please वेलकम डॉक्टर बडानी साहब, वेलकम। हाँ प्लीज कंटिन्यू। हाँ नमस्कार। हाँ So I was बट exactly talking about some herbal medicines, herbal formulations, herbal plants, and in this context, turmeric contains a very high component of curcumin. That's very important for a lot of heart functions, and they are able to reduce a lot of effect that is causing the angina, that is causing the blockage in the heart. So these are the natural extract. Natural extract curcumin. Curcumin gold is very costly, very costly. 95,000 per kg. But simple point 0.5 mg is helpful in removing most of the symptom like blockage and kind of any angina pain, arthrosclerosis, and they have the very good anti-thrombotic effect. That is kind of developing blockage because of lack of this. So they are going to dissolve all these blockage kind of things, and I recommend whatever the clinical trials and studies are there, based on that, more natural formulation, natural recommendation should be there by most of the doctors. And the second level, first level of as a medicine, because based on these extract only medicine are prepared, and they are helpful in reducing the congestive heart failure, systolic hypertension, angina pectoris, arteriosclerosis, and many kind of venous insufficiency in delivering the blood. So, what are the key players in CVD? If you are talking based on the research, what I found that overweight, obesity is maybe one kind, and beside that, a lot of other kind of things may be involved. For example, high blood pressure, diabetes, and having the high cholesterol. These may be other kind of players in activating the CVD. So whenever we are increasing the weight, we must look after that weight. Our diabetes, we must reduce level of sugars by these herbal plants. We should maintain and we should check up regularly these blood pressure level and cholesterol level also. And what we are eating, that is the most important. And if you can see rising cases of the heart attack in patients aging between 20 to 30-year old. So what may be the reason? So I was looking what may be the reason. So mostly I found because of lifestyle, because of habitual of taking a lot of junk foods, junk oils, and because these oils are not able to be dissolved in the blood cell, they are floating and they are kind of developing a lot of things from
hyperlipidemia to blockage. They are mostly the diet habit and our eating habits, our biological clocks. All these kind of things are important in the youngsters for rising the heart attack between the 20 to 30 years old. So I was looking for some research paper that was very good and recently published in 2023, and these people are researcher in the field of these cardiovascular diseases, and they published a very good review uh, based Ayurvedic roles in preventing and managing cardiovascular diseases, comprehensive review. I will share the link also. You can go through. And another, I was watching the publication in the US journal, that is Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. This journal is published by the uh, USA, and I was looking for a paper, a report exactly, valvular heart disease. From birth, that patient is having a defect in the valves, and they can't be treated easily because they are congenital from the birth also. So they have been treated successfully by certain, that is reported by certain clinical trials with a group of doctors. That was the complete case report. They were successfully able to uh, uh, repair these defects. The wall was of 1 centimeter, and minimum requirement is 4 centimeter. And after 11 months, 9 months to 11 months period was there. Period was very long. So you must have patience when you are taking the Ayurvedic formulation or medicines. And no one, I think, had the patience these days. That is a long time. 11 months took when these kind of uh, treatment was done, and they successfully uh, developed the mitral valve area size from 1.3 square centimeter to 3.52 square centimeter. So we cannot ignore the power of Ayurveda. Power of Ayurveda is always, certain kind of mitral valve is going to be damaged because of rheumatic fevers. Mostly, the reason was given because of rheumatic fever is the major player in damaging the valvular heart disease, and that also can be successfully treated in the clinical trial. So, what was given? I was looking for the name of plants and what was that. So, a lot of things were involved. Time to time, they were changing the medicine, but mostly you can read out what we are saying regularly. Ashwagandha was there, the small wrist was there, Punarnava was there, Amla was there, and uh, you can see a lot of common things are there. Neem was there, uh, Atibala was there, Arjun was there, Alicin was there, a lot of things was there. That the mixed effect was that the symptom of hepatomegaly totally reduced. And if you are taking a lot of steroids based medicine, then mostly these conditions occurs hepatomegaly, swelling in the livers. So they are going to obstruct also the breathings. So special guidance was there of yoga teachers, and they were guiding perfectly to the patient how to take the medicine and how to do the meditation, what kind of exercises. So all they were useful in kind of treating such kind of diseases. You can go through the very important literature, cardiology in Ayurveda, V.B. Athawale, and that was published by the Chakhamba Sanskrit Pratishthan Varanasi. And the next publication also, Ayurveda Management for Heart Disease, GLN Sastri, the same publisher. So, if you classify type of heart disease, many classifications are there, but basically I classified them into the 5 diseases according to the modern medicine: myocardial ischemia, hypertension, coronary heart disease, angina, and minor heart attack. So already I have discussed what may be the reason in coronary heart diseases, and that may be because of
certain kind of muscle weakness or sometimes some kind of blockage, and that's why we can say that imbalance between coronary blood flow and myocardial requirement. So heart muscle must be very strong. If they are going to be weakened by anything, and then certainly we are going to have this kind of CSD called as coronary heart diseases. And cholesterol is one of the very high risk factor. Hypertension is very high risk factor. They must be controlled timely. And cardiac protection, we can protect our heart by suppressing lipid peroxidation effect and cardiac apoptosis by these herbal formulation, what we will discuss shortly. We're going to discuss. So, what are the global deaths? This is not a hidden data. Obviously, this is available in the public platform. 17.9 million deaths annually it has been observed because of the cardiovascular diseases. So, these diseases represent disorder related to circulatory system, especially heart and coronary arteries. So, obviously, the our lifestyle or dietary habit is very very important because industrialization have many side effects. A lot of stress is there at the workplace. A large number of toxic environment is there at the workplace. So people are consuming a lot of alcohols. They are a smoker. Sometimes they are using the tobacco to reduce these stress. So that's why, and sometimes the genetic factor may lead to the CVD. Sometimes age may be a reason. Sometimes COVID was a reason. Sometimes gender was a reason, and sometimes community also, because sometimes you will see sibling marriages are there. So they may be weakening the genetics of the individuals, and they may also be one of the reason that is prone to CBD. So, what are the ischemia? Ischemia, when heart muscle is going to die, and that is because of lack of oxygen. So, they also may be curable by the Ayurvedic way, but modern medicine applying the stent in order to open the arteries by administering the catheters. Sometimes stroke are there, and in which there is a slow evolution of brain injury that is called as the stroke. Nowadays is very common, and many procedures are there to stop the tissue damage in the brain and the सॉरी सर, muscle. सर आपका एक ही स्लाइड शो हो रहा है बहुत समय से, अच्छा, लंबे लंबे। जस्ट मिनट जी मैडम, जी जी। सम टाइम बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू, तो मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। गूगल मीट थोड़ा सा इस मामले में है कि ये मेंटेन नहीं कर पाता इंटरनेट की स्पीड को। जी, जी, अभी आ जाएगा। अगेन आई एम शेयरिंग दैट। आ गया मैम? हेलो, हाँ आया, अभी आया। आ गया ना? स्ट्रोक, स्ट्रोक पे आया, स्ट्रोक पे। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, हाँ, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव आ रहा होगा। आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव आ रहा है? आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव आ गया, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। मैं दूसरा भी इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, इन केस कि अगर एक वीक होगा तो दूसरा चल पड़ेगा अपने आप ही। Yes, sir. Just a minute. I think this time should not be a problem. My slide is visible, sir? Hello? No, Audible, not sir? yet. No. Oh, just a minute. आप बोल दीजिए।
हाँ अभी स्लाइड भी Ayurvedic perspective. yes yes so this is very important because most of the people knowing कि what are the Ayurvedic perspective, what are the medicine available, what are the plants they are formulated, and some kind of echo is there, sir. I request to mute if anyone have the open mic. अभी ठीक है, I think. Yes, sir. Thank you, sir. So, what are the Ayurvedic perspective? Ayurvedic perspective, people are laughing in India. They are not taking seriously. Ayurveda can treat. How Ayurveda can treat? Ayurveda is a nonsense thing they are thinking. So, for them, I have a lot of data, a lot of clinical things, and I will present in which most of the Ayurveda people are comfortable and knowing these things. So, what are the predisposing factor? Already we have discussed. What are the causes exactly of CVDs? So, heredity may be one of the factor. High blood pressure, diabetes, high serum cholesterol, and some time of involvement of some kind of alcohol or smoking or certain kind of tobacco in the daily lifestyle. So, what is happening? Maybe one causes thickening of arteries or hardening of arteries, and that is causing the angio obstruction, a lot of angina pain. That is because of Vata dosa. And angina, what you would say in the Ayurveda, and what are the symptoms? So, angina is a kind of pain normally felt in the chest, and also pain may be there in the jaws, in the abdomen area, and there is a these are called as silent symptoms. Sometimes it gone automatically, it appears and it gone, and one might not be thinking these kind of symptoms may be a reason of heart attack. So suddenly, because of uh, anything, blood clotting may start in our blood vessels. So that is mostly causing the heart attack. So, what are the Ayurvedic formulation? If you'll see, uh, a formulation, mixture formulation is called as the Abana. That was found very effective, and that found to reduces the frequency and severity of angina attacks. If anyone feeling, just search out on the Google Abana formulations. You'll find any medicine by any pharmacy, and we are also formulating this kind of medicine, and they are very helpful in severity, reducing the severity of angina. What they contain exactly? They contain a lot of gugul, asok chal, and garlic, and a lot of things. Amla. So all these are present in these kind of Abana formulation, and gugulu, a very common name for most of the diseases. I was telling sir, sometimes the formulation is very common and it is helpful in most of the diseases, many diseases, you can say. So Gugulu is a kind of one of the Ayurvedic formulation that is used in many kind of formulations. Without this, you cannot solve the heart problem, you cannot solve the urology problem, urine problem, prostate problem, diabetes problem. A lot of work is there. Very important plant Gugulu. Green tea also very helpful in avoiding the clogging arteries. If you are thinking a lot of pains are there, then you must start a kind of green tea, and that may helpful. And garlic, obviously, I have discussed a lot about that. And they are very helpful. Turmeric, they contain the curcumin, so they are reducing the cholesterol. So that's why they may reduce the angina attacks. Ginkgo biloba, they improve the blood flow by the same actions. And what can make the heart muscle very strong, that is ashwagandha and silajit. These are the two medicine, two herbal formulation, you can say two herbal powder, herbal extract, plant-based medicine, you can say. They are very responsible for making the heart muscle very strong. So one must use regularly. And Gugulu is that is called as Indian and Delium, and they reported in several clinical trials. They reported to found to promote lipid breakdown, managing the LDL cholesterol oxidation, and exactly they are a very good uh, managed by our liver and our systems.
They are easily digestible. They are also helpful in proper excretion of bile acids. That's why, because bile acids are not releasing, we are having a lot of cholesterol in the liver. So if excretion of bile acids is there, then we can manage our cholesterol automatically. So Gogulu is doing the natural function. It promoting the excretion of bile. It reduce it breaking down the lipids, managing the LDL cholesterol oxidation. So a lot of other uh, function they can do if they are mixed with the ginger or they mixed with the other component of the herbs. Ginger alone found to reduce the cholesterol and prevent blood clots. Citrine, that is the component of Garcinia, I have personally given to many patients, and they exactly inhibiting the synthesis of fatty acids in the liver. So lipid deposition is going to be stopped by this Garcinia. This Garcinia we are recommending for the weight loss program, for the fatty people, for the angina, for the heart problem, for the muscle weakness, for the cardiovascular disorder. So these kind of herbs are very, very beneficial for kind of problems. Sometimes capsicum, red capsicum is very beneficial and recommended to reduce these blockages because of certain chemical component present in them. And high blood pressure is a force that um, developed in the heart, and they are damaging sometimes wall of arteries. So we must maintain a normal blood pressure, not high blood pressure, not too low blood pressure. Low blood pressure is because of weakness of the digestive fire. If we are having the vata dose, then certainly cannot digest properly, and acidity, a lot of acidity will be there, and that will causes the high or low blood pressure. So and proper circulation may be affected. So in cough dose, you can say a lot of liver function is going to be damaged. That's why the cough dose is there. And in the case of cough dose, you may also have a poor circulation, blood circulation, and that may result in the fluctuation in the lower high blood pressure. So if you are having the lower high blood pressure, just go for the checking of the liver or checking of the some kind of ECG that will show you exactly what is happening. Or you can also check yourself at home by checking if you have the frequent acidic formation, acidity in the stomach. Then I recommend use neem kalme. That uh, made that kind of formulation to reduce such kind of acidity, improve the digestion, improve the digestive fires. So automatically you are going to heal that kind of blood pressure problems. So if you are talking Ayurvedic perspective, there is a Arjuna chal and some kind of trikatu is there that contain three components made up based on the Arjuna chals, and sometime Brahmin Botukala that is called, and Jatamasi, turmeric, dalchini that is also called as cinnamon, ginger, garlic, black pepper, and all this kind of formulation or kind of uses at home with uh, tea, they are very helpful in balancing the pitta condition. So garlic I already discussed. Garlic is very helpful in balancing the vata, and vat, pitta, kapha. They are the basic component of emergence of any kind of disease. So if you have to diagnose first, what is your problem? It's a vata based or kapha based or pith based. So if kapha based is there, then trikatu is very useful. If vata based problem is there, garlic very useful. And if pith based is there, then turmeric, aloe gel, saffron, all these are very useful. And sometimes Brahmi is added in most of the medicine available in the market to reduce this cardiovascular disease or blockage, and that is mostly useful for the those people having the pitta type of problem. So also in market, if you'll see Brahma Rasayan, name of the medicine is the Brahma Rasayan, and Saraswat powder. They are also helpful. I will tell you what is their component and how they are working.
So obviously Saraswati churn having ashwagandha, shont, ajwain, mirch, brahmi, shankpushpi, people, kala jeera, safed jeera, and pepti. Okay. So obviously we are recommending these components and formulating these components to reduce, along with the gogulu, to reduce the arthritis, bronchitis, arteriosclerosis. So sometimes we are discussing with the patient that component is ingredient is same, but ingredient quantity is different in different kind of diseases. For example, if we are talking about the arteriosclerosis or arthritis, the component of gogulu is very high. Other component are kind of means 60-40 ratio, 60% Gugulu and rest having the 40%. So they are also helpful in PMS, stress, reducing the stress. Some kind of peptic ulcer is there. And a medicine is also available that's called is the avipittakar, that is reducing the pith. And they contain a lot of component, that is pipli, triphala, mustaka, tejpatta, kala mircha, lavang, and all these. So they are effective in reducing the acidity, heartburn, gastritis, anorexia. Later, they are going to be converted into the heartburn. So a kind of plant, very common plant that is uh, usually available on the roadside. That is called as the ati bala or bala, and they are commonly used to reduce these heart problem, heart diseases. They are going to soothe the arthritis pain, angina, and they rejuvenate the nutritive value, and that is a kind of stimulant for the heart, and also helpful in reducing the inflammation that is going to develop in the case of CVD. So, Bala have a very good property that they are balancing both Vata and Pitta. Right. So, Haritiki, very common plant that is given to the asthmatic patient. They are having the cough, asthma, or kind of abdominal disturbance, or some kind of tumors, or kind of heart diseases, skin diseases. So this is a very common addition to the most of the Ayurvedic formulation go through or tribulus, there is stress. This is also very helpful in the cardiovascular disease. They are also helpful in reducing the urinary bladder problem, urine problem, uric acid, and they are also going to maintain the lipid functions properly, and that's why they are regularizing the heart function. They are curing the heart diseases. And if you see, a lot of other plants can be used for reducing such kind of cardiac disorders. For example, Arjuna, Borhevia diffusa, plumbago, terminalia, Bithania somnifera, that is called Ashwagandha, Solanum nigrum, Tinospora, and that is also called the Guruchi, Piperlingam, and Embellia ribus bud. Uh, so you'll see most of the cases of high blood pressure, muscle pain, and this kind of anxiety, insomnia can be solved by taking the ashwagandha that is called as the Methania somnifera, and this kind of Guruchitinespora, and sometime red coral powder and pulse are going to maintain effectively these high blood pressures and insomnia problem. So a formulation is the Hridayamrit that contain a lot of things, and they are useful for controlling high blood pressures, anxiety, and insomnia. And another formulation I was watching, and this is very useful for those people having the hiccups, hemorrhoids, and the respiratory disorder, frequent coughing problem, and that is called as the Hingu Vachari Gutika. And also, they are very helpful in reducing the angina, that is pain in the heart. And what they contain at least 10 to 15 herbal formulation, and I have given here a lot of list is there. So what are the key benefits already I have discussed? They are going to reduce the hypertension. Hypertension is only because of the what problem. And what problem is developing when we are worrying excessively, taking extra stress of the workload. Uh, all these are because of problem of workplace, toxic environment, what we are seeing, toxic culture, toxic thinking,
thinking about harming others, damaging others. So that's the problem arising in the person himself. Overwork, taking a lot of anxiety. So they are developing a lot of stress in nervous system. They are developing nervous system disorder. Cough hypertension is due to obesity, tiredness. You feel tiredness when there will be cough hypertension. Edema will be there. High cholesterol they are having. So obviously the cough hypertension is arising. And जल्दी with आप गया hypertension is associated with जब liver एंजॉय disorder. करेंगे We should keep our liver and liver can be tested if they are working fine or not. SGOT, GPT tests are there, right? Liver function test, LFT function test, liver function test is available. You can check your liver if they are functioning properly or not. So, uh, we should avoid a lot of things in our diet. Automatically, we can थोड़ा control. बिस्कुट दो तो With a बिस्कुट problem like we should avoid uh, uh, that is very high fat containing milk, kind of milk. We are not recommending butter, eggs, and plenty of hearty spices in the diet, particularly a high level of mustard, high level of onions. They can be used in the optimum level. That high level of anything, excessive of anything is bad. So you can what you can do to reduce such kind of symptom or effect. You can crush the garlic clove and you can take with the honey once a day or twice a week, depend on your symptoms. And sarsat powder already I have discussed. You can take that with the warm milk, or you can use the nutmeg. And ashwagandha you must use. You will not going to have any problem. So in every disease, you will see I'm recommending ashwagandha, multivitamin. So that's why, because ashwagandha have a multi-facet effect from heart, from the liver, from kidney, from diabetes, everywhere. There's a big role. And Brahmi is also you can take in the case of heart pain or heart cardiovascular diseases. That can be taken one pot with the warm water, and cow ghee is ultimately this is a gold that can calm the nerves, relieve heat and stress, and a lot of other beneficiary effect are there eating the pure cows based ghee. So, another heart attack is because of myocardial infarction when muscle is going to coronary muscle, especially coronary arteries, are going to damage and they are fail to deliver blood a certain part. And sometimes arteriosclerosis means thickening and hardening of artery wall due to calcium deposit. So calcium deposition is there, and they causing the this kind of heart attack, and how you can dissolve them. And because of calcium deposition, what is happening? The artery wall losing elasticity and they become hard, so hard that they increasing the blood pressures. So that's why, and to maintain that blood pressure, a lot of angina pain starts, chest pain starts, and ultimately they are converting to the stroke, heart attack, and sudden cardiac death, right? SCD, that is called as sudden cardiac death. So you must check. One must check how to balance. You must know how to balance calf, vat, and pith. So a lot of formulation Gogulu are helpful in reducing the cough. Already we have discussed, and how to maintain the vat, how to maintain the cough, how to maintain the pith. So Gogulu, how to take if you're having such kind of angina pain, you should start immediately taking Gogulu minimum 1 gram. So you have seen that I am making the capsule of minimum 1 gram, not less than that. So 1 gram is very effective. 1 gram capsule, 1 gram powder you can take in the morning and evening for 3 months.
और कोट करके आप वाटर, 1 कप वाटर में हल्का बॉयल कर दीजिए, मतलब बहुत ही लाइट बॉइलिंग, हाँ, है ना। अच्छा और उसको अच्छा, छान करके हाँ, मतलब 5-7 मिनट बॉयल करिए, सारा एलिसिन रहेगा, ऐसा कोई डैमेज नहीं होगा, और पानी वो पी जाएगी, अच्छा अच्छा, पानी पी जाए, अच्छा। एलिसिन आ जाता है पानी में और बॉयल आंवले करके। का जूस पीते हैं। और दूसरा क्या, कभी कभी वॉकिंग छोड़ देते हैं तो दर्द बढ़ जाता है, लेकिन वॉकिंग करते हैं तो हमको रिलीफ मिलता है। सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार अगर आप वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य नमस्कार मैंने लास्ट में बताया था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रभावी है आपका किसी भी हार्ट अटैक से रोकने के लिए, आपकी ब्लॉकेज हटाने के लिए, आपका ऑक्सीजन लेवल जितना अच्छा रहेगा। आजकल देखेंगे हर जगह एक्यूआई मेजर हो रहा है हाँ, ना, बड़े बड़े शहरों में एक्यूआई क्यों मेजर हो रहा है? क्योंकि जैसे ऑक्सीजन लेवल घटेगा आपका ये हार्ट पेन बढ़ेगा, अच्छा, एसिडिटी बढ़ेगी, डाइजेशन होगा खराब। ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में चाहे शाम को टहल लीजिए चाहे सुबह, और हाँ, खूब बढ़िया ब्रीदिंग करिए हेवी। हाँ, उससे हमको फायदा टहलना होता है। बहुत जरूरी नहीं है, ऑक्सीजन लेना बहुत जरूरी है। पेड़ के नीचे पीपल का पेड़ मिल जाए, आम का पेड़ मिल जाए, ये सब बहुत ऑक्सीजन वाले प्लांट है, बहुत भयंकर ऑक्सीजन है। अच्छा इवन अगर अच्छा, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, पीपल के 4 पत्ते लेकर के, तुलसी के 4 पत्ते लेकर के बॉयल करके पीजिए, वो ऑक्सीजन भी देंगे और एंटीऑक्सीडेंट भी ढेर सारा देंगे। इवन अच्छा ये टमाटर सब्जियों में खुद डाल के पीजिए, है ना, खूब डाल क्या के चीज, खाइए। क्या चीज, क्या चीज? टोमेटो में लाइकोपीन होता है ना, हाँ हाँ, लाइको, टोमेटो खाते हैं, खीरा खाते हैं, हाँ, एप्पल खाते टोमेटो की हैं, एक खासियत और बताता हूँ। सवेरे तो खाली फल खाते हैं, हाँ, सुबह खाली फल पेट। खाइए। टोमेटो की एक खासियत बताता हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, लाइकोपीन होता है सर उसमें, और हाँ, टोमेटो को जितना बॉयल करेंगे उतना लाइकोपीन बढ़ जाता है, अच्छा उतनी पावर उसकी बढ़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, टमाटर को काट के नहीं डालते सब्जी में, अच्छा उसको हम क्या करते हैं, मिक्सी में 4-5 टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं, और उस पेस्ट से अच्छा अच्छा, फायदा क्या होता है कि लाइकोपीन बाहर आ जाता है सारा। क्या अच्छा होता है कि अच्छा, जब हम काट के डालते हैं तो कई बार लाइकोपीन लाइकोपीन पच नहीं, मतलब वो हीट नहीं हो पाता या बहुत अच्छे से बॉयल नहीं हो पाता, तो उसका जो पॉजिटिव हम्म, इफेक्ट है वो हमें नहीं मिल पाता, हमें बीज ही मिलता है ढेर सारा। कई बार आप देखेंगे जो जूसेस वगैरह कच्चे टोमेटो से बनाते हैं, उसमें सीड पूरा बाहर निकाल देते हैं ताकि सीड का हम्म, बैड इफेक्ट ना हो। उसका जो हम्म, लाइकोपीन कंपोनेंट है वो ज़्यादातर आपको वॉल में मिलेगा, उसके जो पल्प है उसमें मिल जाएगा। तो वो बहुत बढ़िया से सब्जी में, यही एक ऐसा सब्जी है जिसको हम जितना पकाएं उतना ही फायदा मिलता है। अच्छा। आप आपके ग्रेवी कहे में सब्जी अनुसार में डाल सकते हैं, और बहुत अच्छा। अ, ग्रेवी तो बनाने का आप हमने जो मैं अपने लिए करता हूँ सर, तो उसमें आपका एलिसिन ये रहेगा, लहसुन गार्लिक 4-5, और आपका ये टोमेटो रहता है, और उसमें डाल देता हूँ प्याज, थोड़ा सा प्याज का भी रस आ जाता है, और ये सारा मिला के धनिया, धनिया बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, कुछ ना मिले तो अच्छा धनिया जरूर डालिए, डेली सब्जी में डालिए, और पेस्ट बना के अगर डाल दिया ग्रेवी में सब्जी के साथ तो अमृत फिर है अमृत। और धनिया का चटनी हम लोग खाते हैं नियम से। हाँ, धनिया चटनी भी, एक चटनी का भी प्रयोग हुआ है, मैं पेपर पढ़ रहा था, चटनी से हार्ट अटैक को रोकना। उस चटनी में अच्छा यही अच्छा, चीजें थी जो हाँ मैंने हाँ, आपको पेस्ट के रूप में बताया सब्जी में डालने को, चटनी में यही थी। टोमेटो या आंवला डाल दीजिए, थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए, अच्छा। तुलसी डाल आंवला का दीजिए, जूस हम रोज सवेरे पीते हैं बहुत एक बढ़िया, गिलास। बहुत अच्छा। सेंधा नमक डाल के डालेंगे, पियेंगे तो हाँ, बहुत अच्छा असर आएगा, बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छा 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 और अच्छा। जो उसका और साइड आप, इफेक्ट है आंवला का वो नहीं होगा अगर अच्छा सेंधा अच्छा, नमक डाल देते हैं तो। सेंधा नमक डालते हैं। अच्छा, आप एक बोले थे
नीम का गोली पतंजलि से मंगवा लिए हैं, और गिलोय का दो गोली, नीम का गोली, और एक अर्जुन छाल का गोली, ये रोज खाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, तो अच्छा, ये कोई सीरियस बात नहीं ना है, थोड़ा दर्द नहीं होना? नहीं नहीं, वो अच्छा। थोड़ा बहुत देखिए दर्द होता है, उसके कारण एसिडिटी, हमने बताया ना कि जैसे बहुत ज्यादा सर ने पूछा कि स्लीप कम हो गई, तो हाँ, जब स्लिप आपकी तो कम। स्लीप कम होगी हाँ। तो एसिडिटी बनेगा, हार्ट बर्न में जाएगा वो। अच्छा तो अच्छा। हार्ट बर्न जब भी हो गुड़ खा लीजिए। गुड़ खा लें? आपका अच्छा। हार्ट बर्न तुरंत ना चला जाए तो कहिए शहद खा लीजिए, कुछ भी मिल जाए, थोड़ा सा सौंफ खा लीजिए, हाँ, है ना। हाँ, होटल वाले आप देखेंगे कि बहुत स्पाइसी, बहुत हेवी, बहुत बैड ऑयल का खाना देते हैं, तो उसके बाद वो सौंफ भी और मिश्री दे देते हैं। सौंफ मिश्री देते हैं? हाँ, वो खा लीजिए, बहुत बेस्ट दवा है एसिडिटी रोकने के लिए। अरे वाह। हाँ। हाँ। और मेरा प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, शुगर भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, कभी 186 196 खाने के बाद रहता है। जी। और लेकिन हाँ, ये हल्का हल्का पेन रहता है, उससे घबराहट होती है, क्योंकि डॉक्टर चार्जर हैं, उन्होंने कहा था कि जब पेन हो तो तुरंत दिखाइए। तो अब की बार, अभी इस साल हमको फिर हर साल में एक बार पेसमेकर चेक कराना पड़ता है, तो इस बार अभी पटना जाएंगे तो मेदांता में दिखाएंगे। नहीं, जो रेगुलर चेकिंग वाली चीज है वो एलडीएल और एचडीएल है, क्या चीज? कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक कराना बस। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, हाँ, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा कहीं बड़ा भी था। जाने के पहले कोलेस्ट्रॉल चेक करिए बस, अगर वो बैलेंस है तो टेंशन की बात नहीं है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल के डाइट लिए, इम्प्रूवमेंट सब हाँ, कर सकते कोलेस्ट्रॉल के लिए दो दवाई अंग्रेजी लेते हैं। हैं। हाँ, आजकल डॉक्टर तो मतलब अगर एसिडिटी होती है, हार्ट बर्न होता है तो पेस मेकर डाल दे रहे हैं। मेरे हाँ। फादर साहब के साथ क्या हुआ, चीटिंग हुई, उस केस को हमने पकड़ा और हमने उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी। हमने बोला कि भाई ये आपने गलत किया है, तो वो शॉक थे कि डॉक्टर साहब आपने कैसे पकड़ लिया ये चीजें, हाँ। क्योंकि वो फ्रॉड कैसे अच्छा। करते हैं हॉस्पिटल कि कोई भी पेशेंट आ गया, हार्ट बर्न हो रहा है, हार्ट पेन हो रहा है, तो तुरंत उसका डॉपलर फर्जी निकालते हैं दूसरे पेशेंट का, और वो आपका डॉपलर बता के ईसीजी रिपोर्ट दिखा के आपको डरा करके और तुरंत स्टंट डाल देते हैं। स्टंट डालना मतलब एक वैसे ही हो गया कि जैसे एक नई कार का इंजन और उसको खोल दिया पूरा और दोबारा उसमें कुछ इंजीनियरिंग कर दी, तो वो 50-50 चांस हो गया, फिर आगे वो आपने डैमेज कर अच्छा, दिया सर्जरी करके। अच्छा, कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहिए, मेरा 2 बार एंजियोग्राफी हो गया, उससे एंजियोग्राफी हार्ट स्पेशल में। कंडीशन में कराना चाहिए, ओपन हार्ट सर्जरी तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, दैट इज द अच्छा लास्ट ऑप्शन। हमने बताया ना अच्छा। कि ये अच्छा। जब इतनी जानकारी, आपने जो इतना लेक्चर कराया है, इतनी इन्फॉर्मेशन, वीडियो भी बनेगी, अगर इसको रेगुलर लोग सुनेंगे और फॉलो करेंगे तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे है, या तो मसल कमजोर होगी, अश्वगंधा खा के मसल अपना ठीक कर लीजिए, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल के कॉम्बिनेशन में ब्लॉकेज हो गई है, लहसुन, अर्जुन चाल, दालचीनी से ठीक कर लीजिए, करक्यूमिन हल्दी लहसुन, वाला कंपोनेंट अर्जुन है, चाल और तो उससे ठीक दालचीनी। करिए। अच्छा, दालचीनी, दालचीनी। है ना, हाँ, बहुत एडवांस दालचीनी को स्टेज में पानी। हो तो करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट आती है, आपको 50 रुपए की एक कैप्सूल पड़ेगी, लेकिन वो 4-5 कैप्सूल में ही आपका सारा ब्लॉकेज खत्म कर देगी। अच्छा। हाँ? एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। यहाँ ये टमाटर के बारे में कहा जाता है जी, कि दैट लीड्स टू स्टोन बिल्डिंग, दिस इज रॉन्ग सर, तो ये हमको बताइए कि दिस बता इज दीजिए टोटली रॉन्ग। कि अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई विधि से उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके तब इस्तेमाल करें तो कोई तभी डर नहीं रहे, या आप नहीं नहीं अगर सर, वो कहते होता हैं। ही नहीं, ये ऐसा होता ओ, ही नहीं। अच्छा। ये अच्छा, देखिए, मैं बता दूं आपको, आपको अच्छा क्वेश्चन पूछा लेकिन आपने। उसमें सर यूरिक एसिड होता है ना, टमाटर के बीच में यूरिक एसिड होता है ना, नहीं नहीं, हम लोग बता मना रहे करते हैं हैं। एग्जैक्टली क्या रीजन है, मैं बता रहा हूँ। अगर जैसे लेवल बढ़ा है बहुत सारा, हाँ। किडनी स्टोन प्रेजेंट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उस केस में टोमेटो का पल्प खाना चाहिए, सीड बाहर निकाल देना चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, अगर नहीं है, नॉर्मल है, तो आप हाँ। मिक्सी में क्रश करके खाइए, सबसे सेफ मेथड।
अच्छा हर कंपोनेंट जा करके टॉक्सिक कंपोनेंट 4 टमाटर में कितना निकलेगा सर? कुछ नहीं होता वो। ज्यादातर वो विटामिन सी होती है 90% कॉपर होता है, 1% कहीं है, ये 0.1% है, वो भी कहीं नहीं। तो टोमेटो का सीड कहाँ होता कहाँ है? बहुत कम होता है, बहुत कम। आजकल तो सीडलेस टोमेटो आ रहे हैं। हाँ, तो अगर फिर वो भी देखेंगे जो अच्छा सबसे डॉक्टर साहब बढ़िया ये टोमेटो होता है वो है आपका नेचुरल टोमेटो, जिसको कहते हैं देसी टोमेटो। अच्छा और जो डॉक्टर हाइब्रिड साहब ये वाले आ रहे हैं उनको बीट तो आप 4 नहीं 10 खाइए, विटामिन सी तो उसमें है ही नहीं, बहुत कम है। अच्छा हाँ, अच्छा बीट डॉक्टर बीट कैसा होता है? बीज बीट कैसा सीडलेस होता है, है उसमें डॉक्टर? बीज होता ही नहीं। है? आजकल बीट जो बीट कैसा हाइब्रिड होता वाले है? टमाटर आ रहे हैं उसमें बीज बहुत कम होते हैं। नहीं नहीं, बीट बोल रहे हैं, बीट। बीट कैसा होता है प्रेशर के लिए और शुगर के लिए? हाँ, बीट तो खाना चाहिए, बीट बीट। सलाद में खाइए। बीट रूट तो बहुत ही अच्छा है, ये आपका ब्लड काफी अच्छा आरबीसी को इंक्रीज करता है। और ये किसी भी तरह से हार्मफुल नहीं है, बॉयल करके खाते नहीं, कच्चा ही खाते हैं। तो बल्कि आप हम जूस बॉयल मान करके लीजिए, खाते आमले के हैं। जूस में आप मिला दें तो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा हम है ना। उसको बॉयल करके एक रोज खाते हैं। हाँ, नहीं इससे नहीं, बॉयल करके तो उसका कंपोनेंट चला गया। अच्छा आप अच्छा जूस अच्छा में अच्छा। डालिए, है ना, एक गाजर, आंवला और कुछ टुकड़े आपके बीट, अच्छा अच्छा बस ये अमृत सिरप हो गया। अमृत है। हाँ, अच्छा अमृत। अच्छा। ये किसी भी एक तरह किलो डायबिटीज मैम, हो, बासवी कोलेस्ट्रॉल किलो हो, मैम, डिपॉजिट हो कैल्शियम। बासवी किलो मैम, आप कुछ बोलेंगी? बासवी किलो मैम, डॉक्टर बासवी किलो मैम। एक अच्छा। सवाल मुझे पूछना है, उसके बाद आप दूसरे को दे दीजिए। हाँ, एक सवाल ये है मैं भूल गया वो सवाल। क्या? देखिए हाँ, हार्ट के बारे में तो बहुत सारी बातें हमने बताई, जी, लेकिन लंग्स के बारे में कुछ, लंग्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल। मुलेठी की बात हमने करी थी, गिलोय जी। गुरुची की बात करी थी। ये ना मल्टीपल इफेक्ट है, अश्वगंधा का मल्टीपल इफेक्ट है। अश्वगंधा, दालचीनी और आपका मुलेठी, गिलोय, ये सब आपके रेस्पिरेटरी मसल को इतना स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि जब भी हमारा लंग्स अफेक्टेड होगा तो 3 तरीके से इफेक्ट होता है। या तो कोई इन्फेक्शन हो गया, या तो मसल वीक हो गई, या तो पॉल्यूशन इतना भर गया कि वो काम ही करना बंद कर दिया। पैचेस जो हो जाते हैं एक्सरे में हाँ, दिखते हैं, हाँ, वो क्या पैसेज का होते कारण हैं? है पॉल्यूटेंट, प्रदूषण। पैचेस प्रदूषण है, हाँ जी। तो उसको कैसे निकाला जाए? तो डिटॉक्स करना होता है, बॉडी को स्ट्रांग बना। मसल स्ट्रांग करने के लिए तो आपको देखिए, जब तक मसल पावरफुल नहीं होगी, लंग में एक कैपेसिटी है वो हर चीज को बाहर निकालने की, हर चीज को थ्रो करती है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है बॉडी की तरफ। हाँ, तो जनरली लोग तो वो मसल इनहेलर। हमारी स्ट्रांग अगर है, अश्वगंधा लेके, शिलाजीत लेके, इस तरह की चीजें जो होती है ना, पावर देती हैं, बहुत स्ट्रांग पावर। और प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए। जैसे चने का पाउडर है, वो आटे का, देखिए आजकल हमने एक स्पेशल आटा बनवाया है, बहुत अच्छा आपने याद दिलाया कि हमारा डाइट ही सब कुछ है। डाइट में अगर आटे में आप परिवर्तन कर दें थोड़ा सा, हमारी जी। बॉडी को इतनी ताकत मिलने लगती है कि हमें फिर थोड़े से अश्वगंधा और शिलाजीत खाने से ही उतनी पावर आ जाती है लंग्स में। जैसे चने का, सोयाबीन का, हमने ये 2 नए चीज डाले हैं। मक्के का अच्छा। आटा, जई का आटा, है ना, और मिलेट्स तो थोड़ा डाला ही है उसमें। जी। ये मिला के 5 चीजें मिला के हमने इस बार आटा बनाया है। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारा शुगर लेवल भी काफी मैनेज कर दिया इसमें, भूख नहीं लगती है बिल्कुल। और जो पावर की फीलिंग आती थी, कमजोरी महसूस होती थी, वो चीजें खत्म हो गई। तो कैसे इसको हम लोग को अब खुद बनाना होगा या मार्केट में है? हाँ, हाँ, मार्केट से लेना पड़ेगा आपको। 1-1 या, केजी आप सब ले लीजिए, तो 5 चीज लिया तो 5 केजी हो गया, और 5 केजी आपके लिए महीना भर के लिए हो गया। एक सेकेंड जरा हमको लिख ले दे दीजिए हाँ कि जी। 5 जो है कौन कौन है, हाँ, जरा बताएंगे। एक तो आपने चने का, क्या चीज? चने का आटा, चना,
चना, हाँ ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन, मक्का, मक्का, जई, जई, जई 4 हुआ। 4 हुआ ना। हाँ, और एक है तुझे बता रहा, मिलेट्स में डाल लीजिए, बाजरा है मिल। हाँ, मिलेट्स कोई भी। अच्छा, इसका आटा बना करके हाँ उसमें कुछ अश्वगंधा वगैरह मिला के आटे में ही डाल दिया जाए, क्या नुकसान है? नहीं, नहीं, इतना ज्यादा अश्वगंधा नहीं चाहिए। और ठीक। बॉयल करने के बाद अश्वगंधा पकेगी रोटी ना, तो वो खत्म हो जाता है उसका पावर। अच्छा अच्छा। वो कच्चे तो, में ही उतना पावर देता है और इजीली डाइजेस्टेबल है, कोई अश्वगंधा तो ऐसा नहीं है। अश्वगंधा हैज ए रोल टू प्ले इन लंग्स ऑल्सो। वेरी गुड, हाँ, यस 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 यस, अच्छा, बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा। आप देखेंगे, मैंने मसल के रोग, बहुत लंबे समय से जो बीमारी थी कि पेन हो रहा था उनको, एक्सीडेंट हाँ, हुआ, वो दूर किया हमने। इवन बहुत ज्यादा वीकनेस थी, वीकनेस क्यों थी? ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रही थी, खाना नहीं पच रहा था, तो अश्वगंधा से ठीक किया मैंने। और इवन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, जिसको बहुत लंबे समय से कफ थी और किसी भी हाँ। दवा से नहीं ठीक हो रही थी, उसमें भी हमने अश्वगंधा चलाया, वो भी, उससे भी काफी आराम मिला। अच्छा, तो तो सारा ये कॉलिंग पावर से है। 2 बार या 1 बार अश्वगंधा? अश्वगंधा सुबह एक कैप्सूल, शाम को एक कैप्सूल, बहुत है। दूध के साथ ले लें, शहद के साथ ले लें, तो और भी अच्छा है, और पावर बढ़ जाती है उसकी। अच्छा, तो there is no better medicine for lungs than ashwagandha. यस, Okay. अश्वगंधा इज वेरी पावरफुल मेडिसिन, अलॉन्ग विद द मुलेठी। मुलेठी जरूर लेना चाहिए अगर लंग्स को आप करना चाहते हैं। उसमें हाँ ध्यान रखें कि अगर स्पेशली प्रॉब्लम आ रही है, तो एक फार्मूलेशन होता है गुगलू के साथ। जी। गुगलू, अश्वगंधा, ये 3-4 चीजें मिला के जो कॉम्बिनेशन होगी, ये प्योरली आपके लंग को हील करेंगी, पावरफुल बनाएंगी, है ना। और बाकी जूस वगैरह जो बात हो रही थी, वो सब लेना चाहिए, In उससे addition डिटॉक्स। to in addition to ashwagandha or In addition to ashwagandha, I mean, there is a formulation that contains हाँ, herbal formulation are there that contain ashwagandha, giloy, mulethi, and all these are placed in one capsule. तो वो आपके पास है, आप हाँ, बनाए हैं? वो है, उसमें हमको निर्गुंडी भी भेजा रहता था, है। तो आपने जो भेजा है अश्वगंधा प्योर है वो, वो प्योर लेकिन अश्वगंधा। अच्छा, वो इसमें मुलेट्री और गूगल नहीं मिला हुआ है, यही नहीं ना? नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं पता थी ना मुझे, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हाँ, है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि मुलेट्री और गूगल लगा करके, अच्छा हाँ ठीक है, अभी तो इसको अलग से भी हम ले लेते हैं, जी, मुलेट्री और हाँ, अलग से गूगल। ले लीजिए। हाँ गूगल कितना दे देंगे? हाफ ए स्पून? हाँ, हाफ स्पून गुगनू ले लीजिए, और बाकी हाफ स्पून लेके और 1 चम्मच उसको शहद के साथ मिला के खा मिलाची? लीजिए। हाँ, मुलेठी। ठीक है, हाफ आपको स्पून। 4-5 दिन में ना आराम मिल जाए तो कहिएगा, ये कॉम्बिनेशन। अरे बाप रे, वंडरफुल। ठीक है, वो तो बड़ा आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो लंग्स का ही हो गया है, आपको बिकॉज जो ऑफ दिया है उसमें निर्गुंडी भी है। निर्गुंडी एक ऐसा प्लांट है, जी। इसका एक्सट्रैक्ट किसी भी तरह का लंग्स प्रॉब्लम के लिए बहुत ही कारगर है। कौन सा प्लांट? निर्गुंडी, मिरगुंडी? NIR, निर, N for हाँ, you can say not, NOT, N for not, है ना। मिरगुंडी नॉट? नहीं नहीं, N फॉर नॉट होता है ना, जैसे अच्छा ना, अच्छा, मुरगंडी। नॉर्थ कोरिया कह तो दिया। ये जो है, निर्गुंडी, ये कैसे खाते हैं इसको? उसमें हाफ स्पून वही तीनों का डाल दीजिए, हाफ स्पून निर्गुंडी, हाफ स्पून गुगलू, हाँ, और तो हाफ। ये कहाँ, ये कम मार्केट अवेलेबल है मिरगुंडी? निर्गुंडी बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, मेरे पास अच्छा, है, मैं भेज दूंगा आपको ऐसे ही